Hi guys. So आज very important session आमे देखिवा. Okay. So next 25 days. Hi guys, welcome to OS Hub. ମୁଁ ଲଳିତ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ OS Hub ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି. ସୋ ଇଏ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଇ OS Hubର ସବୁ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି. ସୋ OPSC ମେନ୍ସ ରେପିଡ୍ ରିଭିଜନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି. ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ. एंड मोर और लेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहले चलो 25 डेज 100 क्वेश्चंस एवं चारिटा जीएस पेपर टोटाल कंप्लीट रहिबो. चारिटा जीएस पेपर रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एवं ता रिलेटेड थ्योरी मध्य कवर हबो. तो आपण माने जदी डेली रेगुलरली आपण माने देखिबे आपण माने को बहुत सारा बेनिफिट पाइबे. ए एग्जाम को बेसिकली मेंस रे आपण को बहुत हेल्प हबो. सो खाली आमे क्वेश्चंस देखिबुनु, ता रिलेटेड आमे आंसर भी देखिबु एवं ता रिलेटेड आमे थ्योरी भी देखिबु. ओके, क्वेश्चंस ता रिलेटेड तो 100 क्वेश्चंस विथ बेसिकली तार मॉडल आंसर. आजिठू स्टार्ट होची सेटा, आजिठू आमे स्टार्ट करूछु. आजिठू नेक्स्ट बेसिकली 25 डेज तुमर ए एग्जाम पई मु डेली घंटे 1.5 घंटा नेबी ए सेशन. ये गोटे बोस्टर भाया काम करिवो. आपण माने देखिबे ये एग्जाम रो बेनिफिट्स कोन. ये पेपर आपण मानकू ये जो क्लासेस आपण को गोटे एडेड एडवांटेज किछि मार्क रो या इवन आपण को सिलेक्शन होबु न हो सेही तर गोटे बेसिकली एडवांटेज दबो. जो माने खास करके इथर मेंस दउचंती ता पाई तो बहुत बड़ काम रे आसीबा. आ समस्त देखि परिबे कि केमिति कोन क्वेश्चन सॉल्व होउची, केमिति कोन ये होउची ये होउची सेही पार्ट को मध्य देखि परिबे. आई होप मोर ऑडियो समस्त को क्लियर अछि. सो शेड्यूल है कौन एवरीडे 10टा बेलू नेक्स्ट 25 डेज चारिटा जीएस पेपर टोटाल चारिटा जीएस पेपर आपण माने कवर करि परिबे. 4 जीएस पेपर तो टोटाल आमे चारिटा जीएस पेपर रे जीएस 1 रे हिस्ट्री पार्ट, जीएस 1 रे हिस्ट्री पार्ट, देन ज्योग्राफी and then social issues. ये पार्ट देखिए. सो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करवा एवं तार रिलेटेड थ्योरी पाखापाखि 32 क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस आमे जेहेतु ये सिलेबस अधिका ए पार्ट रे अधिका आमे डिस्कशन करिवु. ए पार्ट रे आमे अधिका क्वेश्चन सॉल्व करिवु. सेमतिले जीएस पेपर 2 बेसिकली पाखापाखि
28 क्वेश्चंस जो गवर्नेंस पार्ट अच्छी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड पॉलिटी पॉलिटी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस ये ट्राई करिबु कि सब एरिया को टच करिके ये क्वेश्चंस आमे सॉल्व करिबु सब एरिया को टच करी ये क्वेश्चन सॉल्व करिबु सिमिलरली जीएस3 रो बेसिकली कोन ना तुमर सेही भलिया 28 क्वेश्चन सॉल्व करिबु एवं जीएस4 बेसिकली पाखापाखि आमे 20टा पाखापाखि क्वेश्चन सॉल्व करिबु 20 क्वेश्चंस आमे पाखापाखि सॉल्व करिबु एइथरे इकोनॉमिक्स अच्छी इकोनॉमिक्स पार्ट एनवायरनमेंट पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट एंड तुमर डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी ये सब पार्ट आपण माने देखि पारिबे पार्ट रे 200 देन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये पार्ट भी यार सब एरिया द कंसेप्चुअल पार्ट फिलोसॉफिकल जोंडे की थॉट्स एंड एज वेल एज गवर्नेंस एथिक्स इन गवर्नेंस ये सब आमे ये पार्ट रो मध्य कवर करिवा तो आपण माने ओवरऑल एवरीथिंग पाइबे गोटिए बेसिकली एग्जाम पूर्व ये गोटे बोस्टर भाया काम करिवो बहुत बड़ रोल प्ले करिवो ये आपण रिसेंटली एग्जाम पाई ओके सो या पाई आमे तो जी भी एग्जाम आपणकर दौरान एथर मेन्स सेटा या तांको पाई ये गोटे बेसिकली बहुत ही बड़ काम आसीबो तो आमे देखिबा हमर फोकस कौन सॉरी क्वेश्चंस देखिबा प्रथम क्वेश्चंस आजिरो द फोकस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम रूल मूवमेंट एंड इट्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया व्हाई डिड द मूवमेंट फेड आउट बाय 1919 एक्सप्लेन क्वेश्चन देखिले क्वेश्चन समय देखिले focus the objectives of home rule movement focus the objective of home rule movement and its major contribution to the freedom struggle of the India. Why did the movement fade out by 1919? So questions कौन कही everything is around the home rule movement. So main issues कौन ना home rule movement. होम रूल मूवमेंट को तुम्हें सेंटर करी या ऊपर आगे डिफाइन करिवो व्हाट इज होम रूल मूवमेंट या ऊपर डिफाइन करिवो कि व्हाट इज होम रूल मूवमेंट तो एक्सप्लेन अबाउट होम रूल मूवमेंट राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ होम रूल मूवमेंट एंड अचीव फ्रीडम in India to achieve freedom in India reason behind disappeared after 819 and conclude summarize the home rule movement in both aspect positive as well as negative ओके सो ये बेसिकली पार्ट आपण माने देखि परिबे एई भलिया सबु क्वेश्चंस को वेल स्ट्रक्चर लिखिले आपन को भलो मार्क मिलिबो तुमरो सबु क्वेश्चंस रे जोंठी तुमको 15 रु 5 मिलुथबो कि 7 मिलुथबो 10 पर्यंत मिल पारिबो जदि तुमे भलो से लिखुथबो 10 12 पर्यंत मिल पारिबो 10 12 पर्यंत मिल पारिबो तो देखिबा होम रूल मूवमेंट आपण माने जानि जंती जो समय आमर पॉलिटिकल इनएक्टिविटी थिला सेही समय पॉलिटिकल एक्टिविटी आसिला सो होम रूल मूवमेंट इन इंडिया मार्क ए क्रुशियल माइलस्टोन इन द लिबरेशन स्ट्रगल इट वाज इंडिया's response to the first world war from 1916 to 1918 from 1916 to 1980 the movement gained momentum throughout the country the movement gained momentum throughout the country so their primary objective कहितला ऑब्जेक्टिव कथा the primary objective कौन थिला ना सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल फॉर द एंटायरिटी ऑफ इंडिया ओके सेल्फ गवर्नमेंट चाहूला विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सो एमाने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ तो इंडिपेंडेंस चाहू नथिले
से माने सेल्फ रूल चाहूले निजे रूल करेंगे बट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे तो यांकर मेजर मेजर बेसिकली रूलर किए थे सॉरी प्रोमिनेंट लीडर किए थे यांकर बाल गंगाधर तिलक हूँ आनी बेसांत हूँ जीएस खाफाड़े हूँ ये सब लीडर थिले तो बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसांत दी जण ही बेसिकली मेन इनिशिएटर थिले एवं से माने इंस्पायर होइथिले कोठू ना द आयरिश होम रूल मूवमेंट आयरिश माने आयरलैंड आयरिश होम रूल मूवमेंट से माने इंस्पायर होइथिले तांकर एम थिला कोन ना सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज्य विदिन द ब्रिटिश एम्पायर आपण माने जानि चंती जेतळे हमर हमर जेतळे ये हेइथिला आमे जेतळे इंडिपेंडेंस सॉरी स्वदेशी मूवमेंट हेइथिला स्वदेशी मूवमेंट समय स्वराज इज माय बर्थ राइट आई शेल हैव इट ये नारा देइथिले एवं स्वराज रो आइडिया नारा बेसिकली बाल गंगाधर तिलक देइथिले एवं सेही आइडिया को एठी से काम रे लगेले तो बेसिकली क्वेश्चंस रो देखिलो केमिति लेखिबो केमिति तुमे इंट्रोड्यूस दबो ओके तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन क्वेश्चंस पचार देख क्वेश्चंस कौन पचार फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड द मूवमेंट फेड आउट तो मेजर कंट्रीब्यूशन सो यार ऑब्जेक्टिव कौन थिला कि अटेनमेंट ऑफ होम रूल ओके अटेनमेंट ऑफ होम रूल ये तांकर मेजर ऑब्जेक्टिव थिला कौन ना अटेनमेंट ऑफ होम रूल तामाने कौन सेल्फ गवर्नेंस इंडिया एस्टाब्लिश करिया चाहते कौन टाइप रो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जेमती अछि in the similar to the dominion status enjoyed by Australia and Canada. Okay, mass political awakening to mobilize the Indian masses, including educated middle class, toward the cause of self-rule. To mobilize the Indian masses, including the educated middle class, toward the cause of the self-rule. Clear? So, ये हेले तुमर गोटे अटेनमेंट ऑफ होम रूल सब प्रथम पॉइंट मास को एवेयर करवा ओके जोटे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से सेल्फ रूल देन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म गोटे जिते जो समय पॉलिटिकल इनएक्टिविटी थिला से समय पॉलिटिकल एक्टिविटी को ये कन्वर्ट कर आनला तो स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म टू क्रिएट पान इंडिया पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनाइट इंडियंस अक्रॉस द रीजन एंड कम्युनिटीज pressure on British government to exert pressure on British through peaceful political means to grant Indian greater autonomy. आम इंडिया को से ऑटोनॉमी देवा चाहते ग्रेटर ऑटोनॉमी केमिति पॉसिबल हम ग्रेटर ऑटोनॉमी केमिति पॉसिबल हम थ्रो ग्रेटर ऑटोनॉमी केमिति पॉसिबल हम जोटा कि पीसफुल प्रोसेस रे पॉलिटिकल मीन्स रे जो प्रेशर पकई देन रिवाइवल ऑफ द नेशनल स्पिरिट जोटा कहती पॉलिटिकल इनएक्टिविटी को एक्टिविटी करवा टू री इनविगर द नेशनल मूवमेंट जोटा कि ऑलरेडी डिक्लाइन होता आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट सूरत स्प्लिट पर then self government demand for the self rule or self government within the British India not complete independence so these are major basically objective thila so contribution thila कि decline कहीं किया political mobilization strengthening the Indian National Congress को influence of future struggle formation of pressure groups press and propaganda newspaper like Kesari and New India by Anivesand spread message of self rule okay then कहीं डिक्लाइन है पूरा क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बिट बाय बिट आपण में जदि लिखिबे आपण को भल मार्क मिल तो दी रिप्रेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 सो यार डिक्लाइन कहीं केला ना रिप्रेशन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आसीगला से अनाउंस कराइला कि आमे कि सेल्फ रूल दबू इन स्लोली स्टेडीली एवं अगस्ट डिक्लेरेशन बाय चेम्सफोर्ड या मॉन्टेगू डिक्लेरेशन कह जाए से भी ये कहते कि नाउ ऑनवर्ड्स वी आर ट्रांसफरिंग पावर टू द रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 लैक ऑफ मास बेस emergence of Gandhian leadership by 1919 Mahatma Gandhi's सत्याग्रह against the Rowlatt Act took center stage overshadowing the home rule movement internal division and internal division konna difference arose between Tilak and Vesant and other leaders affecting the unity so these are basically major issue thila jaha pai decline hela एवं गांधी जी लीडरशिप तांकर जो सत्याग्रह वगैरह ये सब
को धीरे धीरे फेड आउट हो गला। So conclusion, despite the decline of 1919, the home rule movement was crucial in shaping the basically freedom struggle, created political awareness, unified nationalists, and set the stage for future mass movement under the Gandhian leadership. So ये basically प्रथम पार्ट थिला यार। ओके, सो ये तुम्हारा प्रथम क्वेश्चन थिला होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट भी थे ये टॉपिक रिलेटेड तुम्हारा होम रूल टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ता पूर्व जहाँ भी किसी आमर इश्यू थिला राइट जोटा कि स्वदेशी मूवमेंट हो, सूरत स्प्लिट हो, मॉर्ले मिंटर रिफॉर्म 1909 हो, ये सब आपण मैंने देखीदे सो दैट एक ओवरऑल गोटे एरिया टच हो। देन गांधीयन मूवमेंटर किसी स्मॉल मूवमेंट देखा। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम सोसाइटी एंड रिलीजन इन शेपिंग द इंडियन कल्चर। ये कल्चर पार्ट। तो आम डेली जो चारिटा पांचटा क्वेश्चन देखा, ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग रही। आज हिस्ट्री अच्छी, हिस्ट्री भी आहरी सब पार्ट कवर हम, हिस्ट्री भी सब पार्ट कवर हम। तो मुझे जो पार्ट जो दिन कवर करुच्ची से रिलेटेड पार्ट को आपण मैंने देखी दिंतु और से रिलेटेड क्वेश्चंस ता रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखी दिंतु। आपको यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट दब। So explain about the origin. Explain the origin of Islam society in India. So questions पचारची, explain the significance of Islam society. Explain the significance of Islam society and religion in shaping the Indian culture. तो ये अच्छी। तो फर्स्ट देखिए कि आगे origin कौन, इस्लामिक सोसाइटी origin कौन सेटा आगे देखिए। देन इंडियन सोसाइटी ऊपर इन्फ्लुएंस कौन, मुस्लिम सोसाइटी एंड रिलीजियस डीपली एंट्राइज इन द इंडियन कल्चर, जोटा कि आम देखा आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज सब ये इन्फ्लुएंस अच्छी। तो वन बाय वन देखा। अराइवल एंड एस्टाब्लिश्ड मुस्लिम सोसाइटी जो देखा, अराइवल एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी एंड इस्लाम इंडिया जो देखिए बिगिनिंग इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी मुस्लिम धीरे धीरे आसिया स्टार्ट है कहीं 620 रे बेसिकली कहुए कि मोहम्मद रंकर डेथ है और से बेसिकली इस्लाम ओरिजिन है कहुए। तो 7th सेंचुरी एंड एक्सपेंडिंग द सिग्निफिकेंटली विथ द दिल्ली सुल्तानत 1206 एंड मुगल एम्पायर एट ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। सो आमर मुस्लिम धर राइज होता बट आमर मेन इम्पैक्ट कौन समय होता है जो रूल स्टार्ट है दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल एम्पायर and had a profound impact on Indian culture, tradition and architecture, art and society. Islam emphasis on equality, education, trade and spirituality played a key role in shaping the various aspects of the Indian civilization. So introduction टा बुझी पाले केमती ये क्वेश्चंस टा खाली गुटे टाइमलाइन नहीं, पूरा ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ इस्लाम। तो से ताकू तुम्हें से भाया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रे नबाकू पड़ो आंसर राइटिंग करला बेलू, तुम्हें ताकू नैरोली से आंसर को लिखि पारिबो नहीं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन, कल्चरल सिंथेसिस, सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट, सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट, religious influence and philosophical thoughts, religious influence and philosophical thought. Okay, then गोटे कौन ना सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन, इंडियन सोसाइटी कौन ना कल्चरल सिंथेसिस है दी जन को मिसला, जोटा कि सूफीजिम एंड भक्तिजिम। ये सूफीजिम बहुत बड़ा रोल प्ले करथिला कि भक्तिजिम राइज करिवो, भक्ति मूवमेंट इन इंडिया रे, एवं इक्वालिटी इगालिटेरियन सोसाइटी ये सब आड़ को सेमानकर फोकस थिला। देन रिलीजियस इन्फ्लुएंस एंड फिलोसफिकल थॉट, जेने इस्लाम कोर टीचिंग कौन ना मॉस्क एंड मद्रासा, spread of Islamic education, religious scholarship leading to the center like Delhi, Lucknow and Hyderabad. The Persian and Arabic influence madhya achi. Many Islamic religious texts and administrative records are written in Persian and Arabic, which influence Indian language and literature. Which influence Indian language and literature. Islamic ethics and law, that is Sharia,
concept of justice, that is adil, and zakat, charity, and community welfare, उमा contributed to Indian legal and social system को contribute करछंती। तो देखो कौन कौन बेसिकली इस्लाम्स रो कोर टीचिंग इन इंडिया वर्तमान अच्छी मस्क एंड माद्रासा जे कि इस्लाम एजुकेशन वगैरह स्प्रेड करछंती रिलीजियस स्कॉलरशिप जोटा बहुत सारा जगह दिल्ली लखनऊ हैदराबाद अलीगढ़ वगैरह ये सब पाइबो देन पर्शियन एंड अरबिक इन्फ्लुएंस पाइबो ओके मेनी इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेकर्ड और रिटेन इन पर्शियन अरबिक एंड जोटा कि इंडियन लैंग्वेज को सी इन्फ्लुएंस करछि है ना ऑब्वियसली तुम जानिछ देन एथिक्स इस्लामिक एथिक्स एंड तांगर लॉ जोटा कि शरिया लॉ कॉन्सेप्ट जो जस्टिस हो चैरिटी हो कम्युनिटी वेलफेयर हो ये भी मध्य लीगल सिस्टम सोशल सिस्टम इन्फ्लुएंस then economy and scientific contribution economic and scientific contribution religious pluralism the coexistence of multiple faith under various islamic rulers influenced the india's secular ethos structure indo islamic architecture ये बहुत बड़ा influence है then cuisine mughal cuisine like biryani kebabs sweets became an integral part of indian food culture. Then festivals. Islamic festival like Eid ul Fitr and Eid ul Adha become widely recognized and celebrated across India. The influence on Indian art, architecture and literature. This is very Qutub Minar, Indo-Islamic architecture with Persian calligraphy. Taj Mahal, Agra, blend of Persian, Turkish and Indian element achi. Similarly, Char Minar, Hyderabad, Gol Gumbaz, Bijapur reflect the Deccan Sultanate's unique Indo-Islamic style. Then Urdu emerged as a fusion of Persian, Arabic and Hindi, becoming a major literary language. Major literary language. Getting or not? So getting or not? So these are basically influence. ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଲି ଏଭ୍ରି ଏରିଆ religious influence, philosophical thought, social structure integration हो then economy and scientific contribution, religious pluralism, cuisine, festivals and art, architecture and literature. कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गोल गुम्बज, डेक्कन सुल्तान, यूनिक इंडो इस्लामिक स्टाइल जो सहित देखले उर्दू जोटा कि पर्शियन अरबिक एंड हिंदी तीनटार फ्यूजन एंड उर्दू जोटा कि मेजर लिटरेरी लैंग्वेज एवं इंडिया So the Muslim society and the Muslim society and religion deeply enriched Indian culture, influencing art, architecture, literature, language, social values, and philosophy. The interaction between Islamic and Hindu tradition led to the unique and harmonious Indo-Islamic civilization, which remains an integral part of India's cultural identity even. Clear ना नहीं सब बुझा पड़ुची केमती लिखिबो How did the revolt of 1857 influence subsequent British policies in India? How did the revolt 1857 modern India? How did the revolt 1857 influence? How did the revolt 1857 influence subsequent British policy in India? देखो रिवोल्ट 1857 ये बहुत बार बहुत थर पीएससी रे भी आसी आउ यूपीएससी रे भी आसी या उपरु क्वेश्चन सब आसे
तो ये बेसिकली कौन होइछि ब्रिटिश पॉलिसी ऊपर कौन इम्पैक्ट पकई तो ता माने कौन तुम्हें आगे रिवोल्ट 1857 विषय एक्सप्लेन करिवो देन ताकू तार पॉलिसी कौन चेंज हला कौन ताकू एग्जांपल दबो कौन कौन पॉलिसी चेंज होइछि कौन होइछि ताकू जे एग्जांपल दबो एंड फाइनली ताकू समराइज करिवो ओके तो देखिवा सो रिवोल्ट 1850 known as the Indian Mutiny or a first war of independence and is widespread uprising against the British rule in India. Okay, it sparked the rumors of cartridge ଜାଣିଥିବ with animal fat rumor of cartridge with animal fat and fueled by existing grievances over British policy and treatment of Indians. So outbreak देखियो in May in on 29 March 1857 on 29 March 1857 at Barakpur Sepoy Mangal Pandey of the 34th Bengal Native Infantry Sepoy Mangal Pandey of the 34th Bengal Native Infantry attacked his officers. When his comrades were ordered to restrain him, they refused, but they stopped short of joining him in open revolt. तो आउटब्रेक कौन है 29 मार्च 1857 जोटा कि बाराकपुर होता मंगल पांडे कथा मन अच्छी मंगल पांडे मूवी देखी थी 31 इन्फेंट्री ऑफिसर अटैक कले they refused but they stopped short of joining him in the open revolt से ही पालानी तो रिवोल्ट 1857 रे कौन है एक्चुअली तार कॉन्सिक्वेंसेस देखिवा मेजर कॉन्सिक्वेंस कौन एंड ऑफ ईस्ट कंपनी रूल एंड ऑफ कंपनी रूल या ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and government of India Act 1858 रे company rule ended and British government taken the direct responsibility of the Indian affairs. Before 1858 there was no act which named India and this is the first time British named India, that is Government of India Act 1858. Changes in administrative policies, inclusion of Indian in administration, decentralization of power. लिखिब कौन कौन चेंजेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर गवर्नर जनरल को वाइसरे हेले एंड तुम फर्स्ट वाइसरे लॉर्ड कैनिंग हेले देन आउ कौन लिखिब ना तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया SOSI बनागला SOSI सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये फॉर्मेशन करागला एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्तमान ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर रहिले जड़े सी इंडियन अफेयर्स भितर सी लुक आफ्टर करेंगे ये भी मध्य लिखिब ओके देन बेसिकली 1861 एक्ट कथा भी लिखिब से जोटा कि जहाँ जहाँ तुम चेंजेस है खास करके तुम पोर्टफोलियो सिस्टम हो तापर तुम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो ये सब तुम्हें लिखिपर देन मिलिटरी रिऑर्गेनाइजेशन एटी है शिफ्ट इन ब्रिटिश सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी शिफ्ट इन ब्रिटिश सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो यू धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश फॉलो कला सी देखला एमान भीतर यूनिटी आनिबा दबानी यूनिटी आसिले ही प्रॉब्लम क्रिएट हबो okay strengthening of the divide and rule policy the revolt had shown Hindu Muslim unity
हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रिटिश देखिला जो सी देखला कि एमान को अलग करवाटे बेटर एमाने जदि सांग रहिबे ताले ब्रिटिश रो तार एक्जिस्टेंस डिफिकल्टी फेस करिवो तो सेइथिपाई तुमर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश फॉलो कला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कला देन इकोनॉमी पॉलिसी भी ब्रिटिश रो चेंज हला री इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन मेड प्रोडक्शन इंडिया रे स्टार्ट हला ब्रिटिश कौन कला नाउ ब्रिटिश टेकन द machine from Britain to India and produce here itself in India industrialization हला जोटा कि मशीन मेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हला एंड आगु थिला कोन ना हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री थिला स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स को बेसी पावर दिया गला प्रिंसली स्टेट्स को मेजर पावर दिया गला कहीं प्रिंसली स्टेट्स को पावर देले ही सी गोटे सेंटर भाया अलग अलग सब बेसिकली रिपल्सन भाया काम करेंगे तो क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट हला क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट बेसिकली कॉन्शियसनेस लोक भीतर देखागला रिवोल्ट 18 से देखिले कि मासेस रो स्ट्रेंथ अच्छी सो दीज आर मेन पॉइंट्स जोटा कि तुम्हें लिखिपार और ता रिलेटेड तुम्हें एक्सप्लेन कर सबू तुम्हें जाच ता विषय पढ़ा भी होती क्लासेस रो सब पढ़े और से गुड़ा तुम्हें को एक्सप्लेन करा पड़ो रिवोल्ट 1857 रिलेटेड पढ़ले तो दि रिवोल्ट 1857 फोर्स द ब्रिटिश rethink their governance military policy administrative approach they strengthen their control through direct crown rule military restructuring divide and rule tactics but in doing so they also sowed the seeds of Indian nationalism. While it failed to overthrow British rule, it was the first major step in India's long struggle for independence. Long struggle for independence. All clear? All of you clear? Next है ओडिशा हिस्ट्री गोटे बहुत बड़े इंपोर्टेंट पार्ट इवालुएट द रूल ऑफ वीर सुरेंद्र साय इन रेजिस्टिंग द ब्रिटिश रूल इन वेस्टर्न ओडिशा 10 मार्क्स हो पारे या 15 मार्क्स हो पारे 15 मार्क्स देबे मिनिमम तो वीर सुरेंद्र साय और रिवोल्ट 1857 दुटाक से ही समय देखा तो वीर सुरेंद्र साय कथा जो देख आगे विषय एक्सप्लेन कर वीर सुरेंद्र साय विषय देन फ्रीडम स्ट्रगल कौन पार्टिसिपेशन थी देन कनक्लूजन तो फास्ट देखा वीर सुरेंद्र साय 1809 to 1884 was a legendary freedom fighter from western Odisha who led the prolonged resistance against the British colonial rule. His guerrilla warfare tactics, leadership in the Sambalpur uprising, and unwavering commitment to the tribal and peasant rights made him a significant figure in the India's freedom struggle.
सब क्वेश्चंस को आगे पढ़ो भलसे क्वेश्चंस को पढ़ले ही तार विषय लिख सो वीरेश सुरेश साई जोटा कि आम पढ़ीचु भी आम क्लासेस पढ़ीचु देखिए लीडरशिप इन द संबलपुर अपराइजिंग 1826 7 रु 64 पर्यंत सो ब्रिटिश annexed the Sambalpur in 1849 under the doctrine of lapse. This triggered the resistance from Surendra Sai and his follower. So Surendra Sai basically already legally से हबार थिला legal hair भलिया थिले. He mobilized the tribal and peasant communities including Gonds, Pinjal and Kund against the British rule. So tribal uprising करिवारे so यांकर peasant community को भी धरले and as well as tribal and peasant community को सी तांको भी awareness create करले तांको भितरे सेमान को मिसेकी लड़िले against British. He used the guerrilla warfare. His forces operated from dense forest like बरपहाड़ ये बरपहाड़ से बड़ बड़ तांकर ब्रिटिश रो ऑफिसर्स को मारी से छोटिया कथा नुहे बड़ पहाड़ एंड दबरीगढ़ यूजिंग हिट एंड रन टैक्टिक्स disrupted British administration. He cut off the supply line, attacked British outpost, freed several villages from colonial control. His rebellion gained massive support from local zamindar and tribal leaders, making it difficult for the British to suppress. ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इस समय His rebellion gained massive support from local zamindar and tribal leader, making it difficult for the British to suppress. Imprisonment and continued resistance. Surendra Sai was arrested in 1840 and imprisoned in Hazaribagh jail for 17 years. जेतले 1857 रिभल्ट हैला जो सिपाही माने बेसिकली से सेठू फ्री कर देले यांको जेते सब जेल रे थिले हजारीबाग जेल रे थिले समस्त को खुला कर देले तो सुरेंद्र साई से जेल रु बाहर के आसिले ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1850 he resumed his resistance in Sambalpur. He led the several successful uprising against the British 857 to 64. He captured in 1864 and तांको आसिरगढ़ फोर्ट एमपी रे तांको नै रखा गला till his death 1884 पाखापाखि 20 वर्ष जेल रहिला परे तांकर डेथ हला वीरेश सुरेंद्र तांकर इंपैक्ट कौन स्ट्रगल inspired the future freedom movement in Odisha, especially among the tribals and rural community. His guerrilla tactics influenced the later revolutionary movement in India. Pura guerrilla tactics. He exposed the brutality of the British policy and particularly their suppression of local ruler and tribal communities. से तांको ब्रुटालिटी जो ब्रिटिश पुलिस को एक्सपोज कले strengthen the regional resistance against the British rule, keeping Western Odisha in turmoil for nearly 4 decades. So Western resistance करिवार ब्रिटिश अगेंस्ट तांको हिम्मत देला साहस देला कई जने तो रेजिस्टेंस करूची कई जने तो अगेंस्ट ब्रिटिश अगेंस्ट लड़ुची so this is very very important in जोंडा की तो कार कौन डाउट अच्छी तो पचारो तो आम देखिले वीरेश सुरेंद्र साई भी ऊपर solid mark solid 15 mark 20 marks तुम्हें पाई so the Veera Surendra Sai was a fearless leader who challenged the British authority
over 37 years. Despite imprisonment and betrayal, he remained committed to the protecting the rights of his people. His struggle, sacrifices, and guerrilla warfare strategy make him one of the greatest unsung hero of India's freedom movement, and especially conclusion ଟା ସବୁବେଳେ energetic ହେଇଥିବା ଦରକାର conclusion ଟା ସବୁବେଳେ energetic ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଇଡ଼ଲି ସେୟାର କର ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପାଇବ ପୁରା ପାଖାପାଖି 100 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି सोसाइटी सब पार्ट चारिटा जीएस पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस एवं तार आंसर मुझे डिस्कसन करी एवरीडे बेसिस 1 आवर टू 1.5 घंटा जिते जो समय लगे विल डिस्कस तो जॉइन नाउ थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल